हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये कि ज़्यादातर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे DRDO सेप्टम हो गया, SBI PO हो गया, SSC हो गया, IBPS हो गया। ज़्यादातर ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसमें से आइडियम्स एंड फ्रेजेस आते ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस है जो कि आप इस वीडियो को देखना जरूर पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। At one wit's ends. At one wit's end, what would be the answer? Perplexed, clear up, explain, enlighten. The correct answer is option A, perplexed. What does it mean? Perplexed means caused to feel completely baffled. Example, Rahul was at his wit's end to find that his sister has failed. Okay, friends? Next question. At one fingertips to take revenge, matter of shame, complete knowledge, or none of the above. The correct answer is C, complete knowledge. All formula of quantitative aptitudes are at its fingertips. That's why at one fingertips it means option C, computer complete knowledge. Complete knowledge अगर आपसे बोला जाता है एट वंस फिंगर टिप्स, मतलब आपके फिंगर टिप्स पे हर चीज़ होनी चाहिए। मीन्स आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि हर एक बेसिक चीज़ की, जो कि आपको मतलब कि बेसिकली आनी ही चाहिए कि मतलब वो सब चीज़ें। तो उस चीज़ को बोलते हैं एट ऑन वन ऑफ इट्स फिंगर टिप्स। मतलब आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, वो आपके फिंगर टिप्स पे, मतलब कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत का तुरंत जवाब देते हैं, उसे कहते हैं फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स। तो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको दिखा रखा है दैट all formulas of quantitative aptitudes are at its fingertips. Next question. At the spur of the moment, difficult moment. Without delay, great moment. Very slow. The correct answer is option B, without delay. Example, it is not necessary that we should always reply at the spur of the moment in interview. We should think before answer if we are not sure. It means that next question. All in all. Every person, particular thing, same in all. Call all at once. Most important. The correct option is option D. Most important. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे? एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूँ एग्जाम्पल से। एज शी इज ओनली गर्ल इन अ बिग फैमिली सो शी इज ऑल इन हर होम। ऑल इन ऑल मतलब कि इकलौती, इकलौती लड़की अपनी पूरी बड़ी सी फैमिली में एक इकलौती लड़की वही है। शी इज ऑल इन हर होम। Okay, friends, question number 5. At close quarters, close examination, live near to each other, live far to each other, in love. The option is A, close examination. It means real friends never leave us alone in close quarters. Next question. Apple pie order. In a random order, related to fruits packing, related to dry fruits packing, in perfect order. The correct option is option D, in perfect order. Apple pie order means in perfect order. Like on the eve of inspection, everything was kept in apple pie order. मतलब कोई इंस्पेक्शन अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में, जैसे कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में हैं, अगर कोई इंस्पेक्शन होता है कि आपका मतलब कि पढ़ाई कैसे चल रही है, तो टीचर्स आप लोग को एकदम ऑर्डरली वे में हर चीज़ मेंटेन करके आप लोग को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि मतलब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ऐसे भी करते हैं टीचर्स, बट कई बार उसमें और वेल मेंटेन, वेल ऑर्डर्ड में आप लोग का मतलब कि उसमें आप लोग को अच्छे से चीज़ें होती हैं। तो सो फ्रेंड्स, इसका वही है इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर। ऑन द eve ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग was kept in apple pie order. Okay friends, seventh question. Above board, boosting person, honest and straightforward, a man with arrogance, a dishonest person. The correct answer is option B, honest and straightforward. Above board means honest and straightforward. For example, Shikha is a very popular for her above board conduct. Shikha is very popular for her above board conduct. Eighth question. As fit as a fiddle. Very weak, recovering from illness. Look fit but not fit actually. None of the above. Answer is D. None of the above.
As fit as a fiddle means strong and healthy. Fit as a fiddle means strong and healthy. Example, he has recovered from illness and now he is a fit as a fiddle. Okay friends, fit as a fiddle means strong and healthy. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. नाइन्थ क्वेश्चन. At lodger heads in difficulty to be a straight strip. To be at strife. Third, very happy together. D, none of the above. The correct answer is B, to be strife. A loggerheads means or to be at strife. Strife means quarrel, contention, dispute, fight, conflict, etc. strife strife का मतलब है इतने सारे, जैसे इट मीन्स क्वेरल, कंटेंशन, डिस्प्यूट, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, इस टाइप की चीज़ों को स्ट्रिफ स्ट्राइफ बोलते हैं. सो फ्रेंड्स इस मीनिंग को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा. ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल जैसे कि ऑल थ्री ब्रदर्स आर एट लॉजर हेड्स बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट. मतलब कि लड़ाई झगड़े की वजह से all three brothers are at lodger's head. Okay friends, next question. An apple of discord. Cause of wealth, cause of illness, cause of happiness, cause of quarrel. The correct option is option D, cause of quarrel. An apple of discord means cause of quarrel. Land is an apple of discord between two brothers. Land is a apple of discord between two brothers. 11th question. At a loss. At a business loss. At a business loss. At a relational loss. To be unable to decide. D, none of the above. The correct answer is option C, to be unable to decide. At a loss means to unable to decide. The option, I'm at a loss to know what to do. I'm at a loss to know what to do. Question number 12. At a daggers drawn, to have bitter enmity, to be very friendly, to be unknown, to be very familiar. The correct answer is option A, to have bitter enmity. Next question. Sorry, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसका. लाइक एनिमिटी मीन्स द स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग एक्टिवली अपोज्ड. एनिमिटी मीन्स स्टेट or feeling of being actively opposed. Example, the quarrel between two friends has grown more bitter now and they are at daggers drawn. At daggers drawn means आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि एनिमिटी मीन्स स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग एक्टिवली अपोज्ड, जिसका एग्जांपल है आपको, जैसे इस वर्ड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि क्या होगा, दैट क्वेरल बिटवीन द टू फ्रेंड्स हैज ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट ड्रैगन स्टोन. ओके फ्रेंड्स. 13 क्वेश्चन. एट लार्ज, वेरी फेमस, नॉट फेमस, एब्सकॉन, वेरी फार. इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्सकॉन. एब्सकॉन क्या होता है? एब्सकॉन क्या होता है? एब्सकॉन फ्रेंड्स होता है, एब्सकॉन का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए. एब्सकॉन फ्रेंड्स, आप लोग एब्सकॉन का आप लोग मीनिंग मुझको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एब्सकॉन का मीनिंग क्या होता है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे. सो फ्रेंड्स, इससे मीनिंग तो आपको पता ही चल जाता है, बट मैं आपको बता देता हूँ. एब्सकॉन मीन्स, एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया, पुलिस ट्राइंग टू कैच हिम बट ही इज स्टिल एट लार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट सी, baffled, very happy, very excited, very sad. What does it mean? At sea means. At sea means option A, baffled. My brother is at sea in maths. He cannot solve even the easy problems. My brother is at sea in maths. He cannot solve even the easy problems. So, what does the baffle means? Baffle means उलझा हुआ. उलझा हुआ मतलब कि कंफ्यूज्ड, बहुत ही ज्यादा, मतलब भ्रमित, भ्रमित टाइप का. बेफल्ड मीन्स भ्रमित. मतलब माय ब्रदर इज एट सी इन मैथ, ही कैन नॉट सॉल्व इवन द इजी प्रॉब्लम. मतलब वो उसको आसान सवाल करने में भी उसको मतलब कि बहुत ही कंफ्यूजन होती है, वो भ्रमित हो जाता है उन सब चीजों के लिए, इसीलिए उसको कहते हैं एट सी. एट सी मीन्स बेफल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बिगर बैंग ऑफ योर बक, मोर ऑफ योर मनी, नॉट फॉर मनी, मोर फॉर योर नेचर, मोर फॉर योर स्माइल. A bigger bang for your buck means option A, more for your money. A bigger bang for your buck, more for your money means more for your money. Explanation.
that this is a treat that gives you plenty of bang for bucks. This is treat that gives you plenty of bang for the bucks. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं आपको डेली डेली जो वीडियोस अपलोड करता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वो चीज़ें. आप लोग को डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल के. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत.